Hello first standard. In video number 6 we learned about our body parts like eyes, tongue, nose, neck, then hand, legs. Now today we will learn about our mouth. So what is the importance of mouth? Why it is important? Because we can speak and eat food with our mouth. Is it? Yes. Now we will learn about teeth. Why teeth is important in our mouth? So we can bite and chew food with our teeth. Teeth are useful to chew food and take a bite. It is very important. If we are not chewing our food, we will get stomachache. Now skin. Without skin, our body will never cover. So it is largest sense organ of our body. Skin is the largest sense organ of our body. We can feel hot and cold, smooth and hard and rough, etc. through our skin. Is it? Yes. So these are some body parts. Do you know some body parts are single and some body parts are in pair? So which body parts are single? So the body parts like our forehead, then neck, chest, stomach, then which body part? Tongue. Yes, these body parts are single, but some body parts are in pair like eyebrows, eyes, then ears, then knee, ankles, toes, then shoulders, elbow, wrist, hands, thigh, foot. These all body parts are in pair. Now we will do some exercise of this chapter number 2 on page number 10. So here some body parts are written which are in pair, means which are two, which we have two. So I have two eyes, two ears, two hands, two legs. You can also write I have two eyebrows, I have two knees, I have two thighs, I have two ankles, I have two elbows. This way you can write. Now body parts which are I have one. जो हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही है, दैट इज नोज, मतलब कि आपकी नाक. दूसरा है टंग, मतलब कि आपकी जुबान, मतलब कि टंग, जीभ. जैसे कि दूसरा कौन सा बॉडी पार्ट है जो सिंगल है आपके बॉडी में? तो वो है चेस्ट. चेस्ट मतलब छाती, वो भी सिंगल है. दूसरा नेक, मतलब कि गर्दन, वो भी सिंगल है ना. नोज भी सिंगल है. सो दिस बॉडी पार्ट. उसी तरीके से फॉरहेड, मतलब कि आपका आँखों के ऊपर का हिस्सा, आईब्रो वाला हिस्सा, जिस पे आईब्रो है वो वाला हिस्सा फेस का, दैट इज कॉल्ड फॉरहेड, है ना. सो दिस इज द बॉडी पार्ट विच वी हैव in parts and some are single. Here one activity is given to you that you have to write. So आपको दो चीज़ें लिखनी है जो आप इन चीज़ों से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माउथ से आप क्या करते हैं? बाइट एंड च्यू, खाना चबाते हैं और बाइट लेते हैं, है ना. देन हैंड्स से आप क्या करते हैं? एक तो कोई भी चीज़ होल्ड पकड़ते हैं, और दूसरा राइट, मतलब कि लिखना. वैसे ही लेग्स का कौन सा बॉडी किस तरीके से यूज़ करते हो आप? रन, RUN, रन, एंड WAK, वॉक. सो यू कैन ऑल्सो राइट वॉक, है ना. लाइक दिस वे यू हैव टू राइट. विच अदर थिंग्स डू यू नो वी डू विथ आवर हैंड्स? वी कैन डू clapping, playing, running through our legs, and clap through our eyes.
So this way it is very important our body part that we use daily.